Sure. Sure. So let me quickly introduce myself. Subhojit, thanks a lot for the opportunity. I know last month, such opportunity to meet all of you to understand about the startups at BR Industrial Association and the Venture Park. So today I got an opportunity to talk to all of you, share few of my experiences. So let us directly start with the session. So if you have any questions, we'll cover even those. So let me share the screen. Give me a second. Okay. Are you all able to see the screen? Yes, sir. Great. So in today's session, we'll try to understand what are the things that we need to do to make the startups successful. So before doing that, let us look at what are the surveys that tell about these startups. So as you can see, around 20% of the startups fail during the first 2 years of functioning. 45% of the startups, don't pass the 5-year threshold, which means 45% of them fail before they complete 5 years. And 64% of the startups fail the first 10 years itself. And only 25% of the startups make it to 15 years. So the reason, there will be many reasons why the startups might fail. But today we'll be focusing on the positive side. I mean, what are the things that we need to do to make the startup successful? I know you're all doing great job at the BIA Incubation Center, but let us go through a few more things that you need to do so that you all do a great job in your startups. So what are things that we are covering today? Sir, if we can put in Hindi, it will be better because most of our startups, you can mix it. You are very good at Hindi. I have taught you. Sure. Yeah, my Hindi may not be good, but no, sir, I have taught you. It is pretty good. Sir. No problem. Sure, चलेगा. Okay. So आज के टॉपिक में हम building blocks for startups. So what are these building blocks? एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के लिए क्या क्या करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द आइडिया. आप सब लोग एक आइडिया से चालू किया है ना. नाउ इस आइडियाज में एक आइडिया आपको कॉलेज में आया होगा या व्हेन यू आर डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एक आइडिया आया होगा या तो व्हेन यू आर डूइंग द जॉब एक आइडिया आया दैट ओके एक प्रोडक्ट बनाएंगे या नहीं तो एक सर्विस बनाएंगे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द आइडिया. एक आइडिया आना चाहिए. नाउ एक आइडिया कैसे रहना चाहिए? सो दैट आइडिया शुड बी कवरिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर. सो कस्टमर के हिसाब से हमको आइडिया बनाना पड़ेगा. अभी आपको एक आइडिया आया है तो वो आइडिया कस्टमर को नीड्स को एड्रेस कर रहा है या कस्टमर का डिजायर मतलब फील गुड फैक्टर के लिए एड्रेस कर रहे हैं या नहीं तो कस्टमर का प्रॉब्लम से एड्रेस कर रहे हैं या कस्टमर का पेन पॉइंट्स एड्रेस कर रहे हैं. वो देखना पड़ेगा. अभी मैं पूछता हूँ, यू कैन पुट इट इन द चैट. फ्रॉम योर एक्सपीरियंस लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ लैपटॉप्स. अभी लैपटॉप्स में innovation, so which are the products which are more you purchase it because of their innovation. So innovative laptops कौन सा है एक बार बताइए. You can put it in the chat. नहीं तो मुझे बता सकते हो. Innovative product laptops में
कौन सा है? एनीवन? बात कीजिए। ओके, डेल इज वन। इनोवेटिव, आप इनोवेशन के लिए लैपटॉप खरीदते हैं, वो कौन सा? यस, मैक। दीपा कुमारी, यस, यू गॉट इट राइट, मैकबुक्स। एनीवन, एनी अदर ब्रांड्स? सो एप्पल, राइट, मैकबुक्स। सो एप्पल का लैपटॉप्स यू परचेज इट उनका इनोवेशन की वजह से। सो द थिंग्स दैट यू कैनॉट थिंक ऑफ, वो इनोवेशन एप्पल का लैपटॉप्स में आप ढूंढ सकते हैं। अभी और एक क्वेश्चन, देयर आर फ्यू लैपटॉप्स उस सॉल्यूशन की, उस स्पेसिफिक सॉल्यूशन के लिए बनाए गए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप्स, गेम्स के लिए लैपटॉप से, प्रोफेशनल यूज के लिए लैपटॉप से। और कौन सा ब्रांड है एक बार बताइए लैपटॉप्स में? स्पेसिफिक सॉल्यूशन के लिए लैपटॉप्स बनाए तो कौन सा ब्रांड है? यस, डेल, लेनोवो, राइट। सो लेनोवो, डेल, एचपी, दे हैव लाइक स्पेसिफिक मॉडल्स। स्टूडेंट्स के लिए एक मॉडल बनाए ये लोग, और गेम्स के लिए एक मॉडल बनाए। सो उस सॉल्यूशन के हिसाब से मॉडल्स बनाए। और सो मतलब एप्पल का फोन्स, एप्पल का लैपटॉप्स, इवन तो दे आर कॉस्टली, बट वो इनोवेशन की वजह से हम खरीदते। लेनोवो का लैपटॉप्स या डेल का लैपटॉप्स उस सॉल्यूशन के हिसाब से हम खरीदते। अभी हम स्टूडेंट के लिए कौन सा मॉडल अच्छा रहेगा वो मॉडल खरीदते। तो अभी एक बात बताइए, देयर आर ब्रांड्स वो कॉस्ट इफेक्टिव है। सो मतलब व्हेन यू कंपेयर विथ लेनोवो और डेल या एप्पल लैपटॉप्स, वो थोड़ा लेस कॉस्ट है, लेकिन वो भी खरीदते हैं हम। सो कौन सा ब्रांड से वो? ओके, डेल कॉस्ट इफेक्टिव है, यस। और देयर आर फ्यू ब्रांड्स। एक एक्सेल का भी एक ब्रांड है जो कि अभी चिप में भी आई है मार्केट में। ओके, आतिफ, Xiaomi, ओके, रियलमी। और क्या ब्रांड्स है? लेनोवो का भी है। आप एसर का लैपटॉप सुने होंगे ना, एसर का लैपटॉप। सो एसर का लैपटॉप्स कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू अदर मॉडल्स, लेकिन लोग खरीदते हैं। नाउ अभी देखिए, डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट सॉल्यूशन एड्रेस कर रहे हैं, एंड हम हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारा नीड के वजह से वो ब्रांड्स को खरीदते हैं। और दूसरा कैटेगरी है, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ बेचते हैं। दे आर कॉल्ड एग्रीगेटर्स। सो दे डोंट मैन्युफैक्चर, so they take it from the manufacturers and they sell it. They are called aggregators. So give examples of aggregators. Few examples of aggregators. So online हम खरीदते हैं ना, okay? Apple is manufacturing his whole thing, but I want to know the aggregators. मतलब ये लोग बाकी के प्रोडक्ट्स लेते हैं, बाकी के मैन्युफैक्चरर्स से लेते हैं और बेचते हैं। सो दे डोंट हैव देयर ओन प्रोडक्ट। सो कौन है ऑनलाइन में हम खरीदते हैं? गिव एग्जांपल्स, कौन है? अमेज़न और फ्लिपकार्ट। एग्जैक्टली, अमेज़न और फ्लिपकार्ट। वो लोग देखिए, वो लोग खुद का, यस, आकाश गॉट इट राइट, यस, वॉलमार्ट। सो ये लोग का क्या है? दे आर एग्रीगेटर्स। मतलब क्या करते हैं? खुद से कुछ बनाते नहीं, but they take it from the manufacturers and they sell it to the consumers. So what is that we are discussing here? What we are discussing is your idea should target one of the 4 quadrants, either innovation driven, या solution driven, या cost driven, या aggregator. So you identify which quadrant you like. Sometimes you might be in 2 quadrants, or in fact it might be 3 quadrants also. आप कौन सा quadrant में है? Find out that. So आपके पास आइडिया है, quadrant में डालो कौन सा quadrant में आप हो,
Okay, it will give an idea. Okay, what is that I'm targeting? Who are my target customers? So that will give an idea. आपका आइडिया कौन सा क्वाड्रेंट है, उसके हिसाब से आपको उन कस्टमर्स को रीच करना चाहिए. So that's what you need to be targeting. Now, आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं. So tell me these things. So आपके पास एक आइडिया है. आइडिया में so how should be the idea? How it will, एक आइडिया आपके पास है, how it will attract the customers and investors. So what will attract them? आपके पास आइडिया है, you are going to a potential customer के पास जाके मिल रहे हैं, okay? और या नहीं तो एक इन्वेस्टर के सामने आपका पिच डेक प्रेजेंट कर रहे हैं. So क्या देखेंगे आपका आइडिया में, और what will interest them, what will attract them? Sir, can I speak? Yeah, please go ahead. Sir, पहली बात तो सर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी सर्विसेज और उसकी डिमांडिंग मार्केट में कितनी ज्यादा है, और अगर मार्केट में अगर वो ऑलरेडी अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो अगर आपने कुछ अनोखा स्पेशली उसके लिए किया हुआ है, तो आप उस मार्केट प्राइस से कितना बेटर किफायती ताकि लोगों तक पहुंचे, और कम प्राइस में भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको मतलब ये डिलीवरी किया जा सके. Very good, Raja. Very good. And Rupesh has written innovative and team. Very good. और कुछ ideas? मतलब और कुछ points? आपका idea? बिजनेस इन्वेस्टर्स स्केल अप पोटेंशियल भी देखते हैं कि बिजनेस को कितना स्केल किया जा सकता है. और जो कस्टमर्स होते हैं वो उसके आइडिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग इसको देखता है कि कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और उनके बजट में है, और वो कितना अपग्रेड हो सकता है. मतलब ऐसा नहीं हो कि बस एक स्टेज पे एक ही प्रोडक्ट उनके सामने है और फिर मतलब अपग्रेडेशन का जब रिक्वायरमेंट हो तो वो नहीं हो. तो ये सारी चीजें मैटर करती है. Very good, Raman. Very good point. And Akash has written, we have to answer why. मतलब, so again, Deepa has written unique. Yeah, idea should be unique. And Rupesh has written innovative. Yes, the ideas should be having that. So let us see what are the things. So one more thing, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें कि कस्टमर उसकी सर्विस देखता है, कि जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है तो उसकी सर्विस उनके नियर बाय अवेलेबल है कि नहीं, और कैसी सर्विस अवेलेबल है, तो ये भी मैटर करता है. Exactly, very good point. So as you all mentioned that, say idea है, first of all when you talk to a customer या investor, it should arouse the curiosity and interest. Oh, what is that idea? What is that? So we have Bhojpatra in our group here. Are they in the meeting? I saw Bhojpatra in the group. Now, when we came for the startup conclave, so we were interested. Okay, what is that they are doing? So it built a lot of interest. Okay, how they come up with the idea of the fiber, banana का fiber से कैसे कर रहे लोग, plates और सब कुछ कैसे बना रहे. It built the interest, the curiosity. That's very important thing that has to be brought. And then पहले भी बात की हमने, that idea वो customers के लिए, is it addressing their need? एक need को address कर रहे क्या, that desire. So look at Apple phones. Every year they come out with a new version, but say what happens, everyone looks forward for that. अरे अभी ये version में कौन सा feature आएगा? So it is looking at the desire, something they don't expect. And sometimes the problems के address करना चाहिए. So is your idea वो address कर रहा है क्या customer का problem या customer के pain points? Think about that. What is it I'm doing? अभी let's take example of Bhojpatra. अभी प्लास्टिक का बड़ा सा प्रॉब्लम है. What is it they are doing? They are coming out with eco-friendly plates, so which is really good. It is addressing the global problem. So it's they are targeting the main problem area of the customers and even the world as a whole, overall देखा जाए. So these kind of things. Next, look at the available market. मतलब total available market कितना है आपका आइडिया में. So एक
ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं हम, सिट ऑन ए ड्राइंग बोर्ड, मतलब आप फाउंडर्स टीम, को फाउंडिंग टीम बैठे हैं, पूरा मार्केट कितना है एक बार देख लीजिए। पूरा मार्केट वी माइट नॉट टारगेट दैट, लेकिन सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट समझिए, वी वांट टू डू इट इन से बिहार, और वी वांट टू डू इट इन तेलंगाना, और वी वांट टू डू इट इन कर्नाटका। सो मेरा सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट क्या है, एंड इवन देयर हमको कंपटीशन हो सकता है, तो उसमें सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट कितना है, मतलब वो समझिए आप कर्नाटका को प्रोडक्ट्स भेजना चाहते हैं या सर्विस करना चाहते हैं, उसमें से वो कंपटीशन भी है, वो कंपटीशन को साइड पे रखें, हमको कितना परसेंटेज का बिजनेस आ सकता है, दैट इज योर टारगेट। सो इसलिए वो एसओई में इधर आएगा, एसए में इधर है, टीए में इधर है। सो आप इधर से चालू करके स्लोली इधर मूव करेंगे, लेकिन आपका फोकस ये रहना चाहिए, सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट कितना वो देखना चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद रामायण एंड अदर्स मेंशन्ड बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है क्या। सो कुछ मॉडल्स होते हैं, दे फोकस ऑन दी आइडिया, प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब ज्यादा कॉस्ट है, लाइक कैपिटल इंटेंसिव है। जो फायदा क्या है, इफ यू आर नॉट एबल टू मेक मच मार्जिन, आप 5% मार्जिन बनाते हैं या मैक्सिमम 10% मार्जिन बनाते हैं, लेकिन एक बार इकोनॉमी कुछ अप्स एंड डाउन्स हुआ, you're getting to losses. अभी देखिए, I'm not sure how many have read, 2 days back there was an article in moneycontrol.com. उसमें the article था कि out of the unicorns in India or overall, only 24% of the unicorns are profitable. मतलब 76% of the unicorns are not profitable. मतलब ये loss making unicorns है, मतलब ज्यादा सा वैल्यूएशन बनाया लेकिन प्रॉफिट नहीं। सो फायदा क्या है? सो यू शुड नॉट when you are making the plan, when you are making the business model, सोचो वो प्रॉफिटेबल है, होगा कि नहीं, प्लान करो। एंड स्केलेबल मतलब okay, I have done it in say my locality, my product has reached my locality, but whether I can scale it to the next level, whether I can reach it to new features, whether I can take it to naya locations, whether I can reach to other states, वो scalable model रहना चाहिए। So these are the things आपको आइडिया बनाते वक्त या आइडिया सोचते वक्त you need to think about all these things। क्या होता है, we are all excited when there is an idea, चलो करेंगे, लेकिन we need to look at all these aspects, profitable होगा कि नहीं या scalable होगा कि नहीं, सोचना पड़ेगा। चलो अभी फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक आइडिया के बारे में बात कर लिया हमने, एक आइडिया आ चुका है। Now the next important thing is founders. So all of you are founders and few of you might have co-founders from outside also. So आप बताइए, what should be the qualities of a founder or a co-founder? Tell me few of the qualities that a founder or co-founder should have. Write down, put it in the chat or speak out. एक फाउंडर के लिए, को फाउंडर के लिए, यस आकाश, प्रॉब्लम सॉल्वर यू मेंशन, वेरी गुड। विजन, डेडिकेशन, यस रूपेश, विजन एंड डेडिकेशन, यस। और क्या क्वालिटीज लेना चाहिए फाउंडर्स को और को फाउंडर को? क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, दीपा यू गॉट इट राइट, वेरी गुड। एंड व्हाट सर, उसको टाइम टू टाइम अपडेट रहना होगा। जैसे कि अभी गूगल का हम एक एग्जांपल लेना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी हिंदी वर्जन में अलग अलग लैंग्वेजेस को कम्युनिकेट करने के लिए आ रही, तो अभी काफी सारी ऐप भारत की भी लॉन्चिंग हो रही है, तो वो कितना बेटर कर रही है। कई बार ऐसा वर्डिंग होता है कि जो गूगल को भी नहीं होता है कि वो ट्रांसलेट बेटर तरीके से कर पाए, तो हमें उस सिस्टम पे भी, उस चीजों पे भी फोकस करनी चाहिए क्या, ताकि वो और भी ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट ला सके, चाहे वो हर वे में हो, चाहे वो जिस वे में भी हो, उसमें इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है। वेरी गुड राजा, वेरी गुड पॉइंट्स, नाइस। रमन बोलिए।
कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेटिव होना चाहिए सर, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए उसके अंदर, टफ सिचुएशंस में भी काम कर पाए, और बस विजन तो होना ही चाहिए सर, और रियलिस्टिक होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी भी होना चाहिए, टीम प्लेयर, लीडरशिप, ये सब क्वालिटीज हैं जो एक फाउंडर में या को फाउंडर में होना चाहिए। वेरी गुड। रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब रिस्क लेने वाला होना चाहिए सर। Exactly, you got it very right, Raman. You mentioned about realistic. It's like very good important point. Bhaskar, you mentioned determination. Yes, रहना चाहिए. Yes, very nice points. Any other points? Okay, so founders के बाद टीम प्लेयर भी, yes, टीम प्लेयर भी होना चाहिए, yes, और मतलब टीम को टाइम टू टाइम पे मोटिवेट करने और इंस्पायर करने का मतलब कैपेसिटी होना चाहिए सर। Exactly, very good. So और क्वेश्चन पूछता हूँ अभी, founders most of the time क्या होता है, maybe I came with an idea, so yeah, मेरा दोस्त और मैं, we have come out with an idea, so एक idea आ चुका है, but I don't know how to take it to the market, or I have an idea, I don't know how to build the product, so then वो time पे मुझे co-founder का जरूरत पड़ेगा, okay, so वो co-founder हमारे दोस्त लोगों में से नहीं, I need to get it from outside. So एक बात बताइए, so co-founder को लेते वक्त what kind of quality you want to see in that co-founder? अगर सर पहली बात तो कि अगर जैसे एक मेरा आइडिया हुआ और हमें उस पर वर्क करना है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं होता उस आइडिया पे वर्क करने के लिए, तो सामने वाला जो को-फाउंडर होगा उनके पास सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, और वो उनका हुबहू अगर उन्हें मेरा आइडिया अगर पसंद आया हुआ है, अगर वो अगर ये मार्केट में भी काम वर्क करने वाली है, तो उनका क्या सपोर्ट सिस्टम होगा कि वो को-फाउंडर एज ए मेरे साथ मिल करके पार्टनरशिप में, ताकि उस आइडिया पे वर्क करे, और जो उसका फंडिंग का सपोर्ट हो, ये इन चीजों का सपोर्ट हो, वो सपोर्टिंग कर सके। वेरी गुड राजा, वेरी गुड पॉइंट, नाइस। सो when you think about the co-founders, so let us see what are those points. So we discuss about founders, so let's start with founders. एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके अंदर, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होना चाहिए। जो भी स्टार्टअप्स हैं उसके फाउंडर्स हो या को फाउंडर्स हो, उनमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि कभी कभी आपके प्रोडक्ट्स को लोग मतलब नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं, और मतलब आपकी सर्विसेज को भी लोग नेगेटिव फीडबैक देते हैं, तो उसको हैंडल करने आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर आपका नाराज होकर चला जाए। Exactly. So that is one of the crucial thing. Raman, very important point, because वो objections है ना, so founders के बीच में भी आ सकते हैं, या when they go to customers उधर भी objections आने के chances है, या when you go to some investor, so उधर भी आने के chances है, so you need to know how to handle those. So very important point that you said. So along with whatever points you discussed, let us look at few more points. So founders, so they need to have the strategy, मतलब एक आइडिया है, how to make it reality. most of the time क्या होता है, एक आइडिया है लेकिन उसको रियलिटी कैसा बनाना चाहिए, that was, you know, a lot of confusion happens to many people. So you need to have the founders or co-founders should have that kind of strategy. Then one more important point, they should be specialized in the commercialization of the invention. See, most of you have the idea, you know, you have come up with a nice innovative idea, नहीं तो एक creative idea आया है. What happens, few startups, you know why they fail, they cannot give the commercial angle to that. एक अच्छा सा आइडिया है लेकिन उसको रेवेन्यू कैसे बनाने का है, where should I sell, what should be the selling points to that, they fail there. That's the reason, you know, when we do this, when there are a lot of surveys for startups, one of the important points is they cannot give the commercial angle to that, उसमें fail हो जाते हैं लोग. So again, you know, always remember that, focus on that. Okay, आज के लिए are we able to visualize, are we able to have the vision how I'll take my product to the market, वो specialization और उसका सोच रहना चाहिए. Next we discuss about co-founders, right? So as we discussed, Raja and Raman have mentioned, co-founders को
अच्छा सा connections रहना चाहिए. If you are outside of my friend circle or outside of my contact circle, ensure that उनके पास अच्छे से contacts है, and they come from different background. अभी समझे, I'm a technology guy. अभी co-founder भी technology है तो इतना फायदा नहीं. But समझे, someone is from marketing background, someone is from branding background, someone is from finance background. They'll give a different perspective to things. So co-founders select करते वक्त have that in mind. And very important thing, अभी आप एक बंदे को लेके आ सकते हो, but if they cannot share the common values, मतलब say I came with an idea, like now Chara Vedi is there, Shanu is there. Now Shanu wants to come up with an idea, okay? So for the cattle, he wants to certify the cattle. He has the veterinary doctors. Abhi, if he brings a co-founder who doesn't share the common value, फायदा क्या है? They'll say that क्या शानू क्या कर रहे हो? You know, this will not work out. अभी आगे जाके क्या करोगे? एक मार्केट हो गया, 2 मार्केट हो गए, उसके बाद क्या करोगे? If they don't share the common values and if they have those kind of people, then there will be just conflicts within the founding team and it will not go forward. So there will be differences रहना चाहिए, but वो healthy differences रहना चाहिए. Always remember that. Okay, so that's very, very important. Now we discussed about idea, and yeah, I got one more message saying that the founders and co-founders should be long-term visionary and teachable. So yes, very important points. हम आइडिया के बारे में बात किया अभी. बिल्डिंग ब्लॉक 1, सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक फाउंडर्स. आइडिया आ चुका है, फ्रेंड्स आर फाउंडर्स आर डन. नाउ आपके पास आइडिया है. व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वैलिडेशन करो आपका आइडिया. सी एक आइडिया आता है ना, वी ऑलवेज गेट पैशनेट. अरे चलो मेरा आइडिया बेस्ट है, इट्स बेस्ट इन द इंडस्ट्री. अरे आई कैन बीट माइक्रोसॉफ्ट, आई कैन बीट एप्पल. That will be the mindset of us when we come out with an idea. लेकिन इतना आसान है क्या? Is it true? पहले वो find out करो, validate करो idea. So what you need to do is that first proper research करो. आपका product हो या service हो या aggregator हो, research करो. एक primary research रहता है, एक secondary research करता है. बहुत पढ़ाई करो. Find out from internet or research papers. So is my idea good enough? What is going on in the market? Is there a need? Yeah, can I create a need? See, idea दो तरफ you know, दो टाइप के रहते हैं. One, there is already a need, and one you might need to create a need. That's what iPhones do, right? So iPhones क्या करते हैं? They are already on iPhone 13 or something, right? They do something which we don't even think of. That is the research they do. They come up with something. They create a need for the customer. वैसे रहना चाहिए. आप सर्वे करो, प्राइमरी रिसर्च करो. So go to the LinkedIn or different ways of survey. There are many ways of doing survey. Survey करो. आपका product. Say I want to introduce a product or service. Is there a demand for that? Yeah, people would like to have that kind of product. Find out karo. Get a pulse of that. So that is one. Next thing is define the right customer. See, who is the right customer? Idea है, लेकिन feasibility study करना पड़ेगा. अभी customer, whether he has the money to spend on my product, that you need to find out. And whether there is a need for that kind of product. As we discussed just few minutes back, couple of minutes back, वो नीड क्रिएट कर सकता हूँ क्या, और ऑलरेडी नीड है क्या? That's what you need to find out. If it is answering, if it's giving tick mark, good. Let us we go to the next step. What is that? Market feasibility study. Detailed market feasibility study करो. Because see, idea has come from our friends or from our mind, from our brain. लेकिन market, find out whether market is ready for that. Do the market feasibility study, detailed market feasibility study. Whether there are competitors. Competitors है क्या?
whether we have similar products. Similar products है तो same features है क्या? So if I introduce, लोग खरीदेंगे क्या? See, from your childhood, you would have seen many products. So बहुत सारे advertisements देखे होंगे, बहुत सारे products देखे होंगे. And 10 साल पहले एक product हुआ होगा. अभी आज maybe it's not there. You would have seen many products like that. So वो लोग क्या, they could not adapt to the situation. So you need to do the market feasibility study in that manner. Whether my product today it's applicable. Like take example of education tech. Abhi of your startups, if there is any education tech company, ask these questions. आज demand है. अभी last 2 साल में pandemic था, demand था. अभी White Hat Junior, you know, they are running into losses. Okay, Unacademy, the numbers are going down. Byju's, slowly they are also getting affected. So now it's not that they'll sit silent. They'll come up with something innovative. Lekin, if I have an education tech, edutech product today and tomorrow, how I can adapt to the situation? Pandemic के बाद कैसे होगा? Say Zoom. Let us take example of Zoom itself. Pandemic से पहले Zoom था, but just imagine pandemic आया, suddenly Zoom has become a multi-billion company. So now pandemic के बाद क्या होगा Zoom? Unless they innovate, unless they come up with something, and slowly people are getting used to Zoom. So you need to get adapted to that. So the market feasibility study is very important. So I'm telling you, this process, this stage is very important. Idea hai, most of the time we directly jump into developing the product. Mat karo. Take time, do proper research, identify whether we have customers for that or not, and do proper market feasibility study. Once you get tick marks for all this study, that is the time you go to the next step. So what is the next step? Product. So now, in product, what is that we need to see? As we discussed, the next building block is product. Now, product में क्या करना चाहिए? One important thing I'll tell you. First, identify the scope of the minimum viable product. So, can anyone tell what is minimum viable product? उसका definition क्या है? सर मैं कुछ ऐसे बोलना चाह रहा हूँ. सर ऐसे जैसे मार्केट में भी अभी आप देखेंगे सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर्स में जितनी ज्यादा है वो भारत में सबसे अधिक हैं आईटी सेक्टर्स के, लेकिन उनके बावजूद भी आज मार्केट में जितनी भी सारी चीजें आ रही जैसे कि आप गूगल को देखो, व्हाट्सएप को देखो, आप इंस्टाग्राम को देखो, फेसबुक को देखो, और ये इनकी जो सॉफ्टवेयर और इनकी जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है ये कहीं ना कहीं इन सबसे जो भारत में बन रही है सॉफ्टवेयर से तो उनसे कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से दे रही है. क्योंकि अभी भारत में भी जब ट्विटर को अभी बैन कराने की बातें चल रही थी कुछ टाइम पहले, तो भारत में कई बार जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के जो आईटीज वाले थे तो उन्होंने भी कू ऐप बनाया था, लेकिन वो उस कदर से जो चलनी चाहिए थे, जबकि सबसे अधिक पॉपुलेशन भारत में ही है, लेकिन उनके बाद भी वो उनको टक्कर नहीं दे पाई है, ना ट्विटर को दे पाई है, ना इन एप्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो सर्विस है वो उस तरह की चीजें नहीं दे पा रही है. चाहे उनकी क्वालिटीज हो, चाहे वो बहुत इजी वे में कनेक्ट करना हो, चाहे फिर वो जिस वे में भी हो, तो उनमें इम्प्रूवमेंट करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है. ताकि हमारे ऊपर भी अगर जैसे गूगल हम यूज कर रहे हैं, हर चीज डिपेंड कर रहे हैं, कल को अगर कुछ जैसे कि अभी आपके अभी इसमें रसिया और इसके बीच में भी चली थी, तो काफी सारे जो अमेरिका कंपनी थी वो रसिया पे उसने बैन लगा दिया, तो अभी हम इस पे डिपेंड हैं. और कल को अगर ये सर्विस बंद कर दी गई, अगर इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कोई वी डोंट नो क्या एग्जैक्टली क्या होने वाला इन फ्यूचर, तो हमें बेहतर इंप्रूवमेंट के साथ हमें रेडी होना चाहिए उन चीजों के लिए भी. वेरी गुड राजा, वेरी गुड. सो कमिंग बैक टू मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, या टेल मी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स क्या है कि जो स्टार्टअप में डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे आइडिया में. ओके, तो एमबीबी एक स्टेज है जिसमें कि हम कस्टमर्स के सामने अपने प्रोडक्ट को मतलब एक प्रॉपर रेडी नहीं कहेंगे बट रेडी थोड़ा कम है कि एटलीस्ट प्रेजेंटेबल है. श्योर, वेरी गुड, वेरी गुड. तो रमन, यस, गो अहेड. Raman, your voice is breaking.
Raman, एक बार just check the connection. Your voice is breaking. Yes, sir. Actually, so that's why I'm not able to hear you. तो MBB वाइज है सर, एक स्टेज है जिसमें प्रोडक्ट प्रेजेंटेबल होता है बट पूरा रेडी नहीं होता है, और वो हम अपने कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को प्रेजेंट करने के लिए मार्केट में एक रिसर्च या फिर एक है जिसमें कि हम अपने कस्टमर्स या क्लाइंट के सामने इसको प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, वेरी गुड पॉइंट। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक स्टेज है सर। Very good, right. And Deepa has mentioned prototype. Yes, right. So, any other definitions of MVP? Rupesh has written product with enough feature to show customers. Good, very good definition. Bania has written example is Ola Electrics. Good. Okay. Any other definitions? Yes, you're right. I know all the examples. And one question was asked by Deepa. Deepa, just park your question. Once we complete our presentation, in the question and answers session, we'll cover your question. Okay. So yeah. So we discussed MVP. So it is very important that uska scope define karo. Say, I'll tell you why. I've seen many startups and I've seen many businesses. वो लोग क्या करता पता है? They keep on developing the product. So इसलिए इधर भी देखिए. So I put a picture in this manner. I have a lot of ideas. मुझे rocket बनाने का है. So everyone thinks that मेरा product rocket जैसा बन जाएगा. लेकिन अभी उसके लिए wait करते रहो. 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है या 3 साल लग सकता है. And I'm telling you, a second point also is related to that. I know few startups or few businesses, अभी 4-5 साल से ये लोग product develop कर रहे हैं. So when I ask them, no, sir जी, I want to have the best of the features in my product, उसके बाद market में जाऊँगा. अभी वो best of the features का definition क्या है? अभी by the time we go into the market 5 साल के बाद, वो best of the features का competition और 100 competitors होने का chances है. So competitors हर बार रहेंगे, but if you are waiting for the best of the product to develop it, you'll be losing out in the competition. So first thing, to show it to what is a prototype. अभी मुझे customer के पास जाने का है, या I can get my first customer, or I can get my first funding. So उसके लिए what is the minimum viable product? What is a prototype? Define करो and start developing that product. And next thing, develop the product in phased-wise manner. अभी देखिए, if Apple had waited for iPhone 13 का features के लिए, if they had waited for that, अभी all these 13 versions would not have come, right? They didn't wait like that. First, iPhone 1 has come, then uske baad 2, 3, 4, like that. We are seeing 13 versions. Now we don't know how many versions. Same case with Redmi. अभी ये लोग क्या करते हैं? अभी आज के लिए what kind of features are required? वो features बनाए. अभी next upgrade में और ज़्यादा features आएंगे. So always do it in a phased-wise manner. उससे क्या होता है? One, हमको time मिलता है to develop the next phase or next upgrade. Then not only that, अभी पहले release 1, we made the release 1. The customers also will give the feedback. अरे, why don't you have this feature? Why don't you have other feature? So they'll also give feedback. And few things we might not have imagined or we would not have thought of. वो customers feedback देते हैं. So इसलिए most important thing, do the product or develop the product in phased-wise manner and take it to the market. And one more advantage, इसमें revenue भी आ जाएगा. अभी phase 1 कर दिया. So phase 1, you have some revenue. From that revenue, you add few more few more features you can add to that. So
Do it in that phase-wise manner. And next, Abhi. Sir, I want to give a small example of this current example of MVP and portfolio, this prototype. That during COVID, when the vaccine, that manufacturing companies were doing the prototypes, they were getting orders from the foreign countries and for the supply, and they were giving the vendors in India. So that was the best example, and I think most of us have been observing that scenario. How they were ready with the prototypes, their research timings and all. And they were also getting the orders and investment from the... Perfect example. Very good. Perfect example. Very nice. Relevant and related example you have given. Very good. So, we're coming back to the product. Abhi, we made the scope of that. क्या develop करने के next 3 months या 6 months या आगे जाके. उसके बाद क्या? Hire the best people. So there are two ways of approaching a product development. Someone might think that, चलो मैं 1 साल लूँगा, I'll recruit interns, मैं slowly 1 साल में बनाऊँगा, उसके बाद market में जाऊँगा. That is one approach. And there is another approach. They feel that, चलो मेरा idea solidify हो गया. I have the best founding team. I have already done the market feasibility study. So मुझे पता है that there is demand for my product. अभी what is that I need to wait for? अभी wait करने की जरूरत नहीं. I need to get into the market. So लोग क्या करते हैं? They go aggressively into the market and get the best people. Even if it is cost, if they get the best people. So one important thing, always make the cost benefit analysis. So मैं कितना cost incur, मुझे कितना cost incur करना चाहिए to get the people or to develop my product, और मुझे कितना benefit आएगा. अभी समझे, if I have burn rate, मतलब the cost that I'm incurring every month. So समझे I incur 2 lakhs per month. So 2 lakhs per month में, now I might develop the product in 6 months time. With 4 lakhs per month, if I get the resources, I might develop it in 3 months. Now, what is your thought? You need to make the cost benefit analysis. And I'm telling you, बहुत सारे startups के लिए confusion रहता है, dilemma रहता है. अरे क्या करूँ? Should I incur cost and complete the product? Or चलो, I don't have the money now, I'll do it slowly. So if I do it like that, am I losing out in the market? So you need to do a lot of research before taking the decision. So cost benefit analysis is something that आपको सोचना पड़ेगा. Opportunity cost, अभी मैं time छोड़ दिया, but am I losing the market? वो calculate करना पड़ेगा. So the founding team has to sit and do that. Now, एक stage हो सकता है where I might not be able to get the best of the people internally. So time pay, I'm telling you, don't hesitate to reach out to the experts. Even if they say that, or I'll charge you some 25 lakhs, yeah, 50 lakh, don't hesitate. If you have a best idea, if you have a superb idea, don't wait. So go to the experts and get the right skill set. And you would have heard about virtual CTO services. बहुत सारे companies say a individual can be a CTO who can give you ideas. Yeah, एक CTO services के लिए teams रहते हैं. Okay, there are venture builder firms or startup accelerators. They can help with the virtual CTO services. Reach out to them. वो लोग आपको मदद कर सकते हैं and help you develop the product. Even if it has to be extra cost, or even if you have to give some equity to them, you have to give some equity stake to them. Don't worry about that. Say you look at the bigger picture. In the bigger picture, if you are getting a small piece, it is still good. But if you are trying to keep everything to yourself, or keep the entire 100% stake with you and do it slowly, maybe you lose the time. But say time is essence for many of these scenarios. आजकल बहुत, see, everyone has a lot of talent, whether it's in India or बाकी के places. Time is essence. Don't lose that. So that is one advice that I would like to give to you. Great. So we discussed about 4 building blocks. Product भी बन गया.
Now, one important thing, the next important thing is the mentors. So, how many of you, or do you all feel that आपका स्टार्टअप्स के लिए मेंटर्स रहना चाहिए कि नहीं? एंड मेंटर्स है तो क्यों चाहिए? How many of you feel that, or the people who feel that mentors रहना चाहिए? Tell me क्यों? How they'll help you? Mentors है तो how they'll help you? सर मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा। एग्जाम्पल के साथ मैं रखना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि भारत में कितनी सारी फोन जो बनाने वाली कंपनी थी, इवन माइक्रोमैक्स की आई, जावा आई, जितनी भी सारी आई, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो एक मेंटर्स, जो आप मेंटर्स के बारे में बात बोल रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में उन क्वालिटी सर्विस के साथ साथ जो मार्केट में अभी क्या डिमांडिंग है, नहीं है, उनका प्राइस रेट क्या है, अगर वो किस क्वालिटी को दे रही है, वो उन चीजों को अगर उसने नहीं रखा तो आज वो कंपनियां इतनी बड़ी होने के बावजूद भी वो बंद हो गई। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा जियो का, जो कि सबसे आखिरी में आई। उसके पहले डोकोमो, इतनी सारी सिम थी, एयरटेल, वोडा, आइडिया, लेकिन आज ये जियो जिस सर्विस में इन्होंने दिया अलग अलग सेक्टर थे, लेकिन इससे वोडा सबको भी और आइडिया भी वो चीजें बंद हो गई, लेकिन आज जियो एक अपना एक अलग मुकाम पे, जबकि सबसे आखिरी में आई थी। तो आप इनको भी देखें क्योंकि इनकी सर्विस बहुत ही अच्छी थी। Exactly. Right. Go ahead, Raja. Raja, go ahead. Tell me. तो सर इन सब चीजों पे हमें एक मेंटर्स जो हमें मोटिवेट करे, उन चीजों को रखें। अगर हमें अभी मार्केट में स्ट्रेटेजी क्या चल रही है, हमें क्या भी नीड है, नीडफुल क्या है, मेंटर्स का काम होता है कि हमें उन चीजों को मोटिवेट करना। अभी अगर हमें कुछ चाहिए, आइडिया चाहिए, तो हम उनसे पूछें कि हाँ अभी ये चीजें चल रही है, हम इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करा सकते हैं, क्या बेहतर क्वालिटी सर्विस ला सकते हैं। तो इन चीजों के लिए मेंटर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Exactly. Very good point. Good. So, any other points? Any other points? सर मेंटर्स सबसे पहले तो जब हम मेंटर सेलेक्ट करते हैं तो रिलेवेंट इंडस्ट्री से सेलेक्ट करते हैं, ताकि उनके एक्सपीरियंस हम यूज कर सकें, उनके कनेक्शंस को यूज कर सकें। और मेंटर्स देयर लाइक वो हमें बाहर से वॉच करते हैं कि हम क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं, या हमारे रिलेवेंट इंडस्ट्री में या सेम मॉडल पे जो कंपनीज हैं उन्होंने क्या गलती किया, और विजन में कि क्या आगे चल के कैसा होगा मार्केट, किस तरह के प्रोडक्ट का जरूरत होगा, डिमांड होगा। तो उस तरह से वो हमेशा हमें ट्रैक पे हमारे बिजनेस को रखने में हेल्प करते हैं। और प्रोडक्ट फिर और भी मतलब मार्केट लिंकेज, जो जिस तरह का मेंटर्स हैं, तो हम जैसे हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारे एडवाइजरी मेंबर्स होते हैं जो कि मेंटर्स होते हैं कंपनी के। कुछ लोग फंडिंग में हेल्प करते हैं, कुछ लोग प्लानिंग में हेल्प करते हैं, एग्जीक्यूशंस में हेल्प करते हैं। तो मेंटर्स का होना जरूरी भी है और रिलेवेंट इंडस्ट्री से होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर इससे मैं एक और एग्जांपल रखना चाहता हूँ सर। नोकिया फोन का मैं एग्जांपल दूं। जब मार्केट में कोई फोन नहीं थी तो नोकिया उस सर्विस दे रही थी। इतनी अच्छी सर्विसेज देने के बाद कहीं ना कहीं मेंटर्स का ना होना, उन्होंने एंड्रॉइड का जब ऑप्शन रखा गया है कि अभी मार्केट में आने वाला जो जनरेशन होगा वो एंड्रॉइड की डिमांडिंग ज्यादा होगी, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि नहीं हम विंडोज बना रहे हैं, विंडोज ही आगे चलेगी। तो उनका एक आइडिया जो लेकर के चला था और उनका कहीं ना कहीं गलत वे में चला गया, जिस वजह से नोकिया की इतनी बेहतरीन सर्विस होने के बावजूद भी वो मार्केट में आज पीछे रहेगी। और वही चाइनीज की जितनी सारी कंपनियां, रियलमी, वो ओप्पो, तो उनकी क्वालिटी सर्विस अगर आप देखेंगे कि नोकिया के कंपैरिजन में वो उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन उनका सेम प्राइस में जैसे लाइक कैमरा का फंक्शन हो गया, वो चीजें रही, एंड्रॉइड को लॉन्च करना, तो वो नोकिया के कंपैरिजन में प्राइस का सेक्टर में कम करके और उनको मार्केट में लाना, इसलिए आज वो इतनी ज्यादा डिमांड में अगर वो चली गई और नोकिया पीछे रह गई, तो फिर इनका भी एक प्रमुख कारण है मेंटर्स का ना होना। Very good point. And Raman, you are mentioning about the related industry, right? Yes, certainly the mentors from same industry will certainly benefit a lot. And I also think of, other industry also. Sometimes what happens, Raman, when they are like from other industry, a different perspective bhi aata hai. So don't ignore that point also. So not every mentor needs to be from the same industry. Sometimes people from other industry also will give a lot of inputs. So wo bhi rehna chahiye. So always be open mind to that as well. And Deepa, you said use their experience to overcome our forthcoming problems. Yes, very good point. Very good point. So any other points that you can think of mentors ke liye? I think Raja, Raman and Deepa have covered. Just like
एज एन एंटरप्रेन्योर आपको कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और कई बार आप फंस जाते हैं किसी पॉइंट्स पे जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से आगे बढ़े। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर आप मेंटर से डिस्कस करते हैं और जैसे कि जो मोस्ट ऑफ मेंटर्स होते हैं काफी एक्सपीरियंस होते हैं, तो आपकी बातों को सुनते हैं, कई सारे ऑप्शंस आपके थ्रू आउट भी निकलवाते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है और उसी के थ्रू आउट आपको एक डिसीजन लेने में मदद करते हैं आई गेस। Exactly. Very good points. See, just imagine this. So simple thing. अभी you would have noticed a lot of times that दो लोग गेम खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं. सभी when you are looking at both the games, most of the times you would have faced this. Hey, why that person has taken that step? Even a senior person or an experienced player, but when you are looking at the game of both of them, you will give ideas. Hey, they should not have gone with that step. They should not have played that step. क्या होता है? Mentor plays that kind of role. Mentor क्या करता है? With their experience, they have seen the outside world. They have seen they are seeing your work also. So their perspective is they are looking at the game of both the sides. दोनों को game देख रहे हैं ना, इसलिए हमको mentors को ideas आते हैं. That's where the mentors come in. They bring their experience onto the table. अभी क्रिकेट में भी देखा होगा. So few things, even great players, because of the mental block, sometimes what happens, they also miss out. But when you're watching the game, it's a different perspective. That's where the mentors come in. So let us look at what are the points that mentors can do. So you don't have a mentor or a business advisor or a coach. So who is a mentor, as we discussed? So who can bring the experience and give the advice, and with whom you can share your ideas, and they will tell you when you're losing focus. And one important point here I need to tell. See, all of you, one piece of advice or one thing that you all need to remember. Most of the times when you're talking internally, या किसी से बाहर लोगों से बात कर रहे हैं, नहीं तो एक पोटेंशियल कस्टमर से बात कर रहे हैं, नहीं तो एक इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, क्या होगा? समटाइम्स they might ask something or they might comment something about your product. अरे ऐसे कैसे प्रोडक्ट बनाया आप? इतना सोचे नहीं क्या? इसको प्रोडक्ट के लिए डिमांड रहता है क्या? So there might be questions like that. There might be situations like that. So always think positive. When you think positive, then you can come out of that so-called, the bad situation. You can come out of that faster. And that's where the mentors play a very important role, because mentors would have seen these kind of scenarios a lot of times. So you know, bata sakte hain, no, do it like that. Don't lose the focus. And one more thing, a good mentor will find a way to make you see your flaws. So क्या होता है? हमारा है, we are passionate. When someone is giving you a suggestion, they say, no, I don't care. Everything is perfect. This happens with most of the startup founders. The mentors will tell you where are the mistakes and they'll fix them. So that's the reason mentor rehna chahiye. And mentor always provides the guidance and consulting. So have a perfect mentor, identify a good mentor, and I'm telling you, they will always help you. So they become the catalyst. So whenever we are getting carried away, they'll help you. So now we discussed 5 building blocks. So good, idea is good, founders are there, product is done, we have done the feasibility study, mentors be here. Now we started the product development. We want to take it to the market. Our product development chalu kiya hai. Now we feel that we need more money now. So remember this, without proper investment, okay, sometimes without proper investment, we may not be able to be successful. So one of the main reasons small businesses fail is lack of money. So most of the startups, क्या करते हैं? They start with bootstrapped बोलते हैं ना? They start with their own money. They invest it. After that, they realize that, oh, पैसा खत्म हो गया, अभी क्या करें? They don't know where to reach, किसको, whom to meet, किसको पूछना चाहिए पैसा. They don't understand, and they,
fail. They stop the products. So investment is very important. Investment क्यों चाहिए? One, for product development, marketing के लिए चाहिए होगा, sales के लिए चाहिए होगा, and not only that, अभी investors, as they are investing, it is in their interest also to get you the deals, because if they get you the deals, then their money is also going up. So that is the reason पहले बात किया था हमने, be flexible to dilute the stake if required. So don't keep everything, don't have the mindset that सब कुछ मुझे ही रखने का है and मुझे ही करने का है. If required, you feel that you are short of money, go for the right investors. And not only that, अभी आप सब लोग बिहार गवर्नमेंट का incubation center में है. So government is giving, the incubation center is giving the grants, some tax benefits. कल उनका आपको बहुत सारे tax reliefs आने के chances है, and they might help facilitate the funding. So always tie up with the government-driven incubation center. Yeah, there could be a startup incubation center, tie up with them, or a startup accelerator. Startup accelerator matlab, so they can help take your product into the market. So you built a product बन गया, अभी market को कैसे लेके जाने के? Maybe I'm good at technology, अच्छा सा product बन गया, अभी next क्या? Social media में कैसे करूँ? Online करना है या offline advertising करने का है? या B2C करने का है या B2B करने का है? For all these questions, startup accelerators help करते हैं. So find out that. And investments के लिए angel investors, like the strategic investors. So don't try to reach out to investors who just put money. You may not get much benefit from that. So identify people who have good connections or strategic investments करते हैं. कुछ angel investors का ही definition ही वही है. वो लोग strategic investment करते हैं, मतलब वो amount invest करते हैं और वो लोग clients भी लेके आते हैं. They find you the leads, they'll find you the deals. So identify, reach out to those kind of angel investors who can help you get connections to the market. So इससे investment का problem नहीं होगा. And always remember the bottom line again, don't be too choosy. You need to make the cost benefit analysis. A cost benefit analysis बनाओ. अभी मुझे 10% equity दे देने का है. Okay, मेरा valuation है इसे 10 करोड़ और 1 करोड़ मुझे पैसा चाहिए. Always remember, when you go for investment, target for next 1.5 years of expenditure. 1.5 years का expenditure calculate करके उतना amount के लिए funding के लिए उतना amount funding के लिए जाओ. So when you are making that, अभी 10% दे देने का, 10 करोड़ का valuation है, 1 करोड़ चाहिए. So don't hesitate. If you have to give 10%, but look at the bigger picture. अभी 10% दे दिया, लेकिन 1 करोड़ मिल रहा है, product development भी हो जाएगा और marketing भी हो जाएगा, sales भी हो जाएगा. So better go for that. बहुत सारे इसमें convertible notes बोलते हैं, बहुत सारे instruments हैं, वो सब कुछ study करके whatever is best वो कर सकते हो. लेकिन most important thing as a startup, today we are not discussing about the different instruments. What we are discussing is what are the things that we need to do to ensure that we are successful. So I'm telling you about the investments and how to think about the investments. So be positive, be open-minded for investment. So these 6 building blocks, I think if you focus on these 6 building blocks, you will never fail. Most of the time क्या होता है, I'm telling you practically मैं बता रहा हूँ. Most of the time we focus on building block 1, मतलब idea के बारे में सोचते हैं. Idea बन गया, we directly get into product development and we take it to the market. इसलिए बहुत सारे startups fail हो जाते हैं. But नहीं, focus on all these 6 steps. So I need to focus on the best founding team, feasibility study करो, get the product, so get the mentors.
get the investment, I think ये सब कुछ किया ना, then the chances of failing as a startup will be less. So we discussed very important points. Now I am making it open to all of you. Do you have any questions? So Deepa had one question. So Deepa, you asked about how to do market research. What are the thumb rules? So always remember, I always tell everyone, first write down your questions. Whatever are your questions, write down that. Say whether you are doing any project or whether you want to discuss or decide about your product scope or overall business model. First, write down your questions. So Deepa, same thing for you. Same thing to your market research. Before market research चालू करने से पहले questions क्या research करने क्या है? See, most of the people struggle here. क्या research करने का पता नहीं. We keep on doing research, but क्या? What is it I need to do research? So it's very important that write down your questions and then start your research. बहुत सारे material है internet पे, but starting point is your questions. क्या research करने का है? First write down this question. That is a thumb rule. Any other questions? I have one. सर, जैसे आपने बताया कि एक स्टार्टअप वेंचर के लिए Yes, be little louder. Tell me. एक्चुअली जैसा आपने डिस्कस किया कि ये 5 ब्लॉक्स जो हैं किसी स्टार्टअप के लिए इम्पोर्टेंट है एंड द लास्ट 6 months is a investment, that means funding. So my concern is if any startup who is very good at a 5 block, like they are very good in a 5 block and they have no funding issue and investment issue, so how we can reach out the angel investor as you talk about? Sure, good question. So how to find out that? Nowadays there are a lot of options to find out the angel investors, but one idea that I can share with you is that we are having few venture builder firms. Search for few venture builder firms. So last month we had the startup conclave, right? So their free flow ventures, which collaborated with Venture Park and Startup Conclave happened. So Free Flow Ventures is one of the venture builder firm. So you know क्या करते हैं? They identify the right investors for you. So your question is valid. Sometimes what happens, maybe we reach out to some investor, लेकिन वो sleeping partner या sleeping investor हो सकते हैं. So we might get money, लेकिन वो एंजल इन्वेस्टर्स नहीं है या नहीं तो ये लोग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स नहीं है, देन पैसा आ गया, बट इफ दे कांट हेल्प यू, आई नो इट विल बी अ प्रॉब्लम. सो फर्स्ट थिंग, फाइंड आउट द वेंचर बिल्डर फर्म्स. सेकंड, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, डू ड्यू डिलिजेंस. ड्यू डिलिजेंस मतलब सी हाउ द इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स के बारे में ड्यू डिलिजेंस करते हैं. इन लोग का आइडिया कैसा है, इन लोग का फाइनेंशियल्स कैसे, तो सब कुछ स्टडी करते हैं. सिमिलरली यू आल्सो स्टडी अबाउट द इन्वेस्टर्स. डेस्परेट मत हो, डोंट गेट डेस्परेट. फाइंड आउट वेदर दे विल बी एबल टू हेल्प यू इन गेटिंग द क्लाइंट्स. उन लोग का हिस्ट्री कैसा है, उन लोग का पास्ट हिस्ट्री कैसा है, और हाउ इज देयर पास्ट रिकॉर्ड. फाइंड आउट दोस एंड देन यू आइडेंटिफाई द राइट इन्वेस्टर. ओके. How much time we have for the question and answer? Just let me know. I think we are already 6:15, but let me know how much time we have. We have the time, sir. We can take more questions. Sure. Yeah. Okay. Any other questions? Sir, एक क्वेश्चन मेरा इन चीज के लिए है, जैसे कि अभी बहुत सारा नेटवर्किंग मार्केट से जुड़ी हुई चीजें आई थी रिसेंटली, जैसे RCM
सेफ शॉप और इस तरह की चीजें, मतलब MLM बहुत सारी अभी, जिसपे MLM पे भी गवर्नमेंट ने भी एक्शन लेकर के उनको भी स्ट्रिक्टली बैन करा दिया गया है। तो ये सारी कंपनियां जो मार्केट में आई, ये केवल और केवल अब खुद मतलब लाइक अपने आप को ही रिच करने के लिए आई। इन्होंने अपने किसी भी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से करने के लिए मार्केट में, यानी कि उसकी क्वालिटी पे फोकस नहीं किया। इनका काम था सिर्फ क्वांटिटी को रखना और लोगों को मतलब इस तरह से करना कि जैसे कि अगर उसकी एक प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर 2000 की भी नहीं है और वो मार्केट में ला करके रखिए 10,000 में अगर वो सेल कर रही है, यानी ये जितनी भी नेटवर्किंग मार्केट, अगर आप, मैंने अभी जो एग्जांपल रखा और अभी मुझे शायद अभी कुछ याद नहीं आ रही है, तो इनका एक क्वालिटी सर्विस पे इसने कभी भी फोकस नहीं किया। और इनका मेन मोटिव जो मार्केट में आना था, जो भी इनके साथ इन्वेस्टर जुड़े हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जुड़े तभी तो उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च किया बनवाने में, इन चीजों पे तो उन्होंने किसी भी तरह से क्वालिटी पे फोकस नहीं किया। तो आज जब बंद पड़ने का और लोगों का एक सबसे बड़ा मुद्दा सब यही है। Yeah. So can you elaborate on the question, Raja? सर तो इन पे आप क्या कहना चाहेंगे तो मैं सर So चीजों पे। okay, even though it's not specific to our discussion, but I'll just quickly tell that. Yes, surely. That multi-level marketing होता है ना, so it's very important that see, पहले भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का कंपनीज थे, अभी पैंडेमिक के बाद बहुत सारे कंपनीज आ गए, अभी फाइनेंस में भी बहुत सारे कंपनीज आ गए. So always remember, so don't get trapped with this kind of MLM sort of companies. And last month, in fact, I met one of the startups. उन लोग का idea something similar था. They want to do social media marketing, but they had this kind of multi-level marketing का concept था. Not sure whether सुबोध जी को याद है कि नहीं, एक startup आया था, where they said you bring more people, then you'll get points. So social media marketing के लिए कंपनी था, लेकिन MLM का कॉन्सेप्ट से आए थे लोग. So I told the same thing. आप if you do come up with your idea in a MLM marketing style, people think that you are a MLM company rather than a social media marketing company. वो dilute हो जाएगा. So to your point, Raja, so before taking up anything on the MLM side, especially people want to make quick money, जल्दी पैसा चाहिए लोगों को, then they end up losing a lot of money with MLM sort of companies. Always do due diligence and get into that. Second, even in your startups, be careful. Somewhere if you have that MLM sort of concept, दूर ही रहो. Otherwise, people will put a stamp that आपका company MLM marketing जैसा है. So be away from that. राव सर, आपसे हमारा एक प्रश्न है सर. rather एक रिक्वेस्ट भी है. As all of us know कि you are serial investor है, आप angel investor है, और हमारे यहाँ 130 स्टार्टअप है and they are really यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सब लोग हम हमेशा हम स्टार्टअप को बोलते हैं कि केवल पैसा के ऊपर मत फोकस करो, पहले अपने प्रोडक्ट को सही करो, अपने बिजनेस मॉडल को सही करो, देन आप जो है किसी इन्वेस्टर के पास इन्वेस्ट करिए. सर आप चूंकि एंजल इन्वेस्टर भी है और हमारे यहाँ आईटी से है, आपने पूछा था सबका प्रोफाइल, ये हमारे जुड़े हुए आईटी सेक्टर में है. मैडम जो प्रश्न की थी, इनका बहुत बढ़िया जूता बनाती है. अगर हम इनको बोलेंगे कि आपको ये अपना जो है सो पीपीटी दे दे आप, तो एक जैसे कि एज ए बेसिक हम अपने को ही एक स्टार्टअप के तौर पे ले रहे हैं, एंड सपोज यू आर इन्वेस्टर, तो सर आप मेरे को ये आप बताओ कि कैसे हम आपको किस स्टेज में अप्रोच करें, एंड बिफोर अप्रोचिंग टू यू एज ए एंजल इन्वेस्टमेंट हमको क्या क्या तैयारी करना है, मतलब हमको क्या क्या देखना है, सो दैट कि हम आपको इजीली कन्विंस कर सकते हैं. थोड़ा सर हमको लगता है कि ये सभी स्टार्टअप के मन में ये प्रश्न है सर, और थोड़ा हमको आपके इसके ऊपर में हेल्प चाहिए सर. थैंक यू. श्योर सुबोध जी, आई थिंक आप एक परफेक्ट बात बताएं. ये प्रैक्टिकली वही हो रहा है मार्केट में. अभी आजकल कैसे हो गया, हम एक आइडिया चालू करते हैं एंड इमीडिएटली दे जंप ऑन टू द लास्ट स्टेप, मतलब डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के पास जाते हैं. अच्छा एक आइडिया है, आई वांट टू गेट 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के पास जाते हैं. बट व्हाट वी सी एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर और एंजल इन्वेस्टर इज दैट हाउ सीरियस आर द फाउंडर्स, हैव दे डन द होमवर्क. So this is what we see. So we are working with many startups. We ask them these questions.
what is your thought process behind this idea? Say idea, सुबह जी, frankly है ना, frankly बताना है तो आइडिया बहुत सारे आते हैं. अभी मैं एक आइडिया के साथ आपके पास आया तो आप और एक आइडिया देंगे मुझे. आइडिया तो बहुत सारे हैं. पहले ये आइडिया प्रैक्टिकल है क्या? ये आइडिया के बारे में मैं होमवर्क किया कि नहीं? वो सब मार्केट फिजिबिलिटी किया कि नहीं? वो सब कुछ करने के बाद, और फाउंडिंग टीम, हाउ सीरियस इज द फाउंडिंग टीम? सो आर द फाउंडर्स हैविंग द माइंडसेट ऑफ making easy money? Because we are seeing few startups, उन लोग को पैसा बनाने का है. अभी एक बीटेक में दो तीन चार लोग फ्रेंड्स दोस्त लोग मिल गए, एक प्रोडक्ट का प्रोग्राम बना दिया. अभी प्रोडक्ट मार्केट इन्वेस्टर्स के पास लेके जा रहे हैं. बट व्हाट आई सी इज एज ए इन्वेस्टर, वो प्रोडक्ट में कितना दम है, ये प्रोडक्ट को आगे लेके जा सकता है कि नहीं. सो एक साल, अभी से एक साल, अभी से 5 साल, अभी से 10 साल, ये प्रोडक्ट का कितना वैल्यू हो सकता है, वो सस्टेन करेगा कि नहीं, वो सब कुछ हम देखते हैं बिफोर वी इन्वेस्ट. सो इसलिए हम ड्यू डिलिजेंस पे बहुत फोकस करते हैं. बिकॉज वी डोंट गो बाय व्हाट द स्टार्टअप फाउंडर्स टेल. देयर आर मेनी पीपल, इवन वी हैव सीन इट इन लास्ट कॉन्क्लेव आल्सो. There are few people who have very good communication. एक आइडिया है, perfectly बताते हैं. There are few people, maybe they cannot convince. We as angel investors or investors, we don't go by the communication. We actually look at the product, the seriousness of the founders, the seriousness of how they want to take it into the product, take it into the market, and are they looking at long term? Many people want to make easy money and come out of that. No, unless we see that there is seriousness, we don't invest. So, any questions from the founders for this? आपने जैसे ड्यू डिलिजेंस का बात किया है सर, तो एज ए स्टार्टअप सपोज उनको क्या देखना चाहिए सर? ड्यू डिलिजेंस का ये तो थोड़ा सा इस पे भी अगर सबको ब्रीफ करें तो हमको लगता है कि इट विल बी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी. Yeah, sure. So, पहले हम देखे थे ना ड्यू डिलिजेंस मतलब, now research, you need to do a lot of research. Very important. It's very important that you do research about your product or service, whatever you want to offer, and find out whether there are already products in the market, and whether there are competitors in the market, what kind of products or services they are offering. And the legal stuff. If you're into fintech or edtech, what are the legal aspects? Okay, and what are the regulations? Because government ka regulations say kya? Find out that. So there are a few startups who are dealing with they have this very good data science, artificial intelligence, Internet of Things ka product, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन आर दे फोकसिंग ऑन द रेगुलेशंस? अभी गवर्नमेंट के हिसाब से वो वैलिड है क्या? सो डू द ड्यू डिलिजेंस इन इनिशियल स्टेजेस. सो स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन दी. अभी समझिए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक प्रोडक्ट है, बैंकिंग का रेगुलेशंस क्या बोलते हैं, आरबीआई क्या बोलता है, सेबी का रेगुलेशंस क्या है. अभी यू लुक एट क्रेडिट, इट इज इट्स हेल्पिंग इन द क्रेडिट कार्ड पेमेंट. अभी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, अरे क्रेडिट कार्ड पेमेंट से मुझे कैशबैक मिल रहे हैं, बट व्हाट इज द लॉन्ग टर्म प्लान हमको पता नहीं. 6 महीने 1 साल में पता चलेगा हमको क्रेडिट का प्लान्स क्या है, बिकॉज दे आर गेटिंग द डेटा नो. बट उन लोग का आइडिया अभी 6 महीने 1 साल में पता चलेगा. बट इफ यू आर डूइंग दैट काइंड ऑफ स्टफ, ऑलवेज मेक द होमवर्क. सो लीगली, compliance, regulations, and competitive analysis, and always remember the copyright issues, patent issues. Remember all these 5-6 points. These are very important. अभी copyright का issue होने के chances है, be careful. Patent का issue होने के chances है, regulations का problem हो सकता है, legal का problem हो सकते हैं,
कंप्लायंस का रेगुलेशन, कंप्लायंस का प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. स्टडी दोज थिंग्स. सो रिसर्च करने के बाद ही सीरियसली गेट इनटू द प्रोडक्ट. अदरवाइज 1 साल 2 साल पता चलेगा दैट यू नो आई डिडंट टेक केयर ऑफ दैट. टाइम वेस्ट हो जाएगा, पैसा भी जाएगा. एंड मनी इज, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. At this age, if you are wasting your time in not doing the proper homework and getting into the product, you lose out. Any questions on that? और किन्हीं मित्रों का प्रश्न है क्या सुबह जी? somebody is asking sir. Please. गुड इवनिंग सर. मेरा नाम भरत पारिवाल है और मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर पाइथन मोटर्स का को-फाउंडर हूँ. एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन है कि हमने एक जो कंपनी है 4-5 साल पहले स्टार्ट किया था और अभी हम रेवेन्यू मोड में है कि हमारा टर्नओवर अप्रोक्सिमेटली जा रहा है, लेकिन अभी भी हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है क्योंकि इन ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड ईवी सेक्टर देयर इज वी नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस एंड फॉर अदर पर्पस, मार्केटिंग आल्सो इंक्लूड. सो आंसर क्वेश्चन इज अबाउट दैट सर कि अगर हम अभी इन्वेस्टमेंट लें या फिर हमारे टर्नओवर को और रेज करने के बाद एंजल इन्वेस्टर या किसी इन्वेस्टर को अप्रोच करें. See, what's your name? Bharat Kumar. Bharat. So Bharat, the first thing that you need to ask yourself is how soon you want to grow your business. Okay, the first thing, that is one. Okay, so that is the first question. Now the second question related to that, maybe the first and second question are related. If my product ready? That's the first question you need to ask. Okay, the product is ready. Okay. Yes, sir. So that is the first checkpoint. That is now. Second, is there a demand for the product? That's the second question. Okay. So if you think that the product is ready and there is demand for the product, what am I waiting for? Don't wait. Okay. So now, if all my checkpoints are done, so my team is ready and there is demand for the product and the product can be scalable. Matlab, today your product, maybe can I cater only to 1 client or 2 clients, or I can scale it up to, if tomorrow I get a business of 50 clients, I'm ready to scale it up. That will be next question. If you say that if given an opportunity, if I have the money, I'll have a developer's team because the product is ready. I need to just replicate the model because business model ready hai, product ready hai. So I need to replicate the model for 50 more clients, and I can do it if I have 20 additional resources. I can cater to 50 clients within 10 days time. So then, I'm able to scale up to 50 clients, and can I scale it up to 100 clients? So if I scale it up to 50 clients, maybe I might clock 1 crore revenue. If I scale it up to 100 clients, maybe I'll do it 2 crores or 3 crores. So is my model ready for that? If you think, if you have yes to all these questions, then what first is go for the additional investment. If the investment is for marketing your product, advertising your product, and adding resources, go for it. Don't lose the time because time is essence. Time is of essence. Thank you, sir. और किन्हीं मित्रों का प्रश्न है? Now I think क्वेश्चन तो लगभग सब खत्म हो गया है सर. एक आपसे सर रिक्वेस्ट है सर, हमारे यहाँ रियली आपका एक हम लोगों को चाहिए सर अपने स्टार्टअप से, हमको वी वांट टू डायरेक्टली कनेक्ट विद यू. और आपने बताया था कि यू आर लुकिंग फॉर स्टार्टअप जो कि आईटी सेक्टर से है, मोस्टली योर इंटरेस्ट इन आईटी सेक्टर. फिर एग्री से आपने बताया कि सब यू आर लुकिंग फॉर सम इन्वेस्टमेंट इन एग्री सेक्टर आल्सो. तो हमारे जितने भी स्टार्टअप है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर से आपको हम लोग ने इंट्रोडक्शन करा दिया है. एंड सर क्या मैं इनको डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कराऊं सर, या वाया हम लोग आप इनसे पिचिंग कैसे करना है सर? नेक्स्ट
next handholding कैसे करना है sir? Sure. So two things, Subodhji. I think two things I would like to propose. One, on the investment, what I suggest is maybe through your team, maybe Prabhat or someone, maybe let's have the startups reach out to us through VentureTalk. Okay, that would be better because एक channel रहेगा, एक official channel रहेगा. Through them, through you, through your team, the startups can reach out to us, and then we can plan it out. You know how to plan for the investments. And second thing, I'd like to propose, in case any of the startups, okay, officially through VentureTalk, or if you recommend to any of the startups, if you need, if any of the startups need our services as mentoring, official mentors or advisory group, you know, we are open for that also. So both the models, both the advisory model as well as the investment model, we are open for that. So Subodhji, I would like to do it through the official channel. So then that will be easy for the startups as well as to us also. एक official channel रहेगा. ठीक है सर. एक सर ने एक mentoring के लिए भी इन्होंने ऑफर किया है, and I think कि इनका एक बहुत अच्छा कनेक्ट है. और सर एक बात बोले हैं क्योंकि हमको लगता है कि सब स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल स्टेज में आपको ये नहीं देखना है कि मेरा 10% स्टेक चला जाएगा या क्या होगा नहीं होगा. You should look about bigger goal. तो हमको लगता है कि ये चीज जो आज के मीटिंग में जो सर ने कहा है, ये सभी स्टार्टअप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है. और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी हमारे स्टार्टअप है, सर का बेसिकली ही इज लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन टेक्निकल. मेरे को बताया कि कोई आईआर से रिलेटेड हो तो आप दीजिए, और एग्री सेक्टर में भी इनका इंटरेस्ट है. तो आप लोग यू शुड कम टू हमारे जो अपना है VentureTalk प्रभात और आप. और सर अब हम लगता है कि समाप्त करते हैं. हमारे सीईओ साहब सिद्दीकी जी एक सर को काइंडली वोट ऑफ थैंक्स दीजिए. Good evening to all, especially good evening, Rao sir. Stay. First of all, we would like to extend our sincere thanks and gratitude towards you, sir. Thank you. On behalf of VIA for sparing your valuable time Sure. to be with us and interacted in very nice manner. Thank you. You have given very vital and important information, knowledge to our startups. I hope all the startups will be benefited with your vast knowledge and experience, what you have shared just now. Sure. Secondly, sir, we are sure we will be able to get your guidance as well as help whenever we feel your need. I mean, Sure. our startups will feel the need. Sure. Your help and guidance. Sure. As right, our member secretary, respected Subodh sir, has requested you, and you very kindly accepted it, that you are ready to welcome the startups through official channel, I mean through VentureTalk. Sure. So we are once again send our sincere and heartfelt thanks to you, sir. And Thanks we a lot. are sure we will be able to connect you whenever we feel your need. Sure. Sure. Okay. Whenever. Thank you. Pleasure is mine. Pleasure is mine. Thanks a lot. Thanks for the opportunity. I'm always available, Subodhji. पटना आइए सर, बिहार आइए फिर दोबारा सर जल्दी. Sure. Thank you. Thanks a lot. Bye, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Stop.